Hello, Isha, can you just confirm, am I audible? Okay. Good morning, everyone. Thank you for joining us today for the quarterly webinar of Credence Wealth. In our budget webinar in February 26, we had highlighted the rising global uncertainties and the potential risk they could pose to financial markets. Since then, those risks have materialized, with markets witnessing increased volatility amid ongoing geopolitical tensions and war led disruptions. These developments have significantly influenced the global landscape, impacting commodity prices, inflation trajectories, capital flows, and overall investor sentiments. In today's session, we'll decode how these events are shaping the current market environment and what they mean for investors going forward. To take this forward, we have our fund manager, Mr. Kartik Mehta, who will walk us through the current market dynamics and share his outlook overhead. Over to you, sir. Good morning, Yashvi. This is fine. Yes. Okay. Good morning, everyone. Thanks a lot for joining this session. I'll very quickly take you through the details. So, I am assuming, Yashvi, that the screen is visible. Yes, Yashvi, the screen is visible to Yes, sir, everyone. it's visible. Okay, thank you. Okay. So the today's topic is, how is the global political landscape shaping up and it is going to impact Indian economy. We have few interesting data points for you all to look at, and then we can open up the session for Q&A. Now, if you look at this carefully, um, the oil prices has a very strong correlation with global geopolitical uncertainty, and especially with the Arab nation or Middle Eastern countries, the sensitivity goes up substantially. So, the latest spike, what we can see is the West Asia crisis. Before that, it was Russia, Ukraine. But the best part, if you observe in this chart, is that these uncertainties brings spike in the oil prices, and eventually the prices cools off and settles down in the range of 70 to $80, so or 65 to $80 rather. So that's the range. There are few exceptions like COVID, where there was a demand destruction because of the pandemic. Otherwise, more or less, prices are hovering in the range of 60 to $80. So this is one area where we are hopeful that as and when the war stops or intensity reduces, the probability of oil cooling off is way too high. Um, Now, if you look at this data, the pre-war production numbers are there for you. So all these countries which are there for you to look at, like Iran or Iraq, Saudi, all, they together contribute roughly 26 percentage of the global crude oil production. And on the second column, it shows about the output which is coming, which is 17% of the global supply, and it is estimated that approximately 9% of the global production has been lost because of the war. And a lot to do with damage to the oil infrastructure is one thing, and also transition and the shipment logistic bottleneck because of the Hormuz closure. And if you look at the last column, the Hormuz dependency is way too high for countries like Iran, Iraq, and it is way too low for countries like Oman. Now, everyone is talking about strait, and we keep on reading in the media that this strait is very, very crucial for vital passage of the global trade. And it is evident from the fact that 38% of the global trade of the crude oil passes through strait. That's a big number. And for the LNG, LPG, it is 29%, LNG 19%, refined oil product 19%, and chemical and fertilizers 13%. So these are the critical energy inputs. आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो,
और रेसिडेंट हो कोई भी हो मतलब you will be needing either crude or LPG or LNG or refined petroleum products and chemical and fertilizer for foods. So I think this is very vital passage from the global trade point of view. Now, if you look at the data on left hand side, there has been a big spike as in when the war started. Uh, the crude oil prices briefly crossed 100 mark comfortably, picked out closer to 115, 110, and then they are now close to 95, 96. This is the price of Brent crude oil. Now, if you look at on the right hand side data, the arrival of ships in the Strait of Hormuz, it was pretty strong and growing consistently, but there has been a big dry or big pause in terms of the new arrivals, and it is obviously because of the war-related uncertainty, bombarding by the Iran on the ships trying to pass through that channel, and also the put up of land, just like a landmine, the sea mines they've put in the Hormuz, which is affecting and causing a panic for the people. Also, insurance companies are not, trying to cover the ship value because of this. So all these things are pretty much evident in front of you. Now, if you look at not only just crude oil prices, but any kind of a cargo movement. So, there is a dry index which transports, the dry stuff from one country to another. So that Baltic dry index prices have shot up roughly 46% ever since the war started. And the maritime insurance premium as a percentage of vessels value, which used to be 0.25 percentage, has now reached to 1 percentage. So basically 100 percentage of the value one has to make as an insurance premium. So it's not viable even if you're allowed to transport your ship through Hormuz and you have some agreement with, let's say, Iran. Then also many of these vessel owners are not finding it lucrative because of substantial increase in the maritime insurance premium. Also, for them, another psychological fear factor is that what if they've been bombarded? Not only just the human value and the financial loss, but entire ship or that uh, the vehicle which is carrying will be damaged or exploded. So in that case, you are deprived of one vessel. If you have, let's say, 15 vessel in your kitty, one of your vessel is getting damaged, then not only you are losing the financial value of the stuff you're carrying on that vessel, but also it is completely destroyed. So your kitty is now reduced from 15 to 14. Also, if you want to replenish it, even if you get the insurance premium, you will not get the new vessel immediately. You will get it 5, 6, 7 years down the line. So basically, you are deprived of the big opportunity cost. As a result of that, many of the logistic companies, despite of getting insurance premium coverage or despite of getting assurance from, let's say, whatever country, they are still not taking risk and trying to pass through the strait. Now, if you look at the volume of crude oil transported through the Strait of Hormuz by country of origin, obviously these are the countries which are using it, like Saudi, Iran, Iraq, and the volume of oil transported through the Strait of Hormuz by destination. So where it is flowing and going. So majorly, if you look at the data, it is majorly China, India, South Korea, Japan. So all Asian countries are using this channel substantially. But the implication on the crude oil prices is for rest of the world as well, because the moment Hormuz supply gets distorted, these Asian buyers will scout for the opportunity or the availability of the crude or energy from some other part of the world. So the energy spiral is actually felt all across the world, even if they are not exposed to straight. Now, if you look at this data on your left-hand side, India's dependence on the West Asia was 59% roundabout in FY20, FY15. So basically around 10, 11 years before. Today, the same number has reduced to 51. So obviously we have been managing and, in terms of diversifying our supply chain, the share of Russia has increased substantially. USA has also increased substantially. So there is a probability that this pie from 51 will further go down. So we are trying our best to navigate and trying every year to diversify the supply chain. Um, you know, this data is slightly.
slightly it's now more relevant now. Oil price normalization, which is on your left hand side, depends on how soon these end. So for example, if the Hormuz remains closed for, let's say, 3 months and above, then there is a probability that the oil price might reach as high as 160, and then it settles down at closer to $100. So that's a green line for you. If it is, let's say, 1 month, then the intensity is much lesser. It will peak out at close to $100 and then eventually settles somewhere close to 75. So this is all depends upon that how long this trade remains closed, and its impact on the countries which are importing energy is high. So for example, in case of India, the energy trade balance, which is negative 2.8 percentage, as a percentage of GDP, it's a big number. So India is obviously very much dependent upon that. However, India's domestic consumption of petroleum product over uh, GDP has reduced over the period of time because of our timely diversification towards other, fossil, other fuels which are not a fossil fuel, for example, renewables. So, we used to consume roughly 1.2 barrels per $1,000 of GDP, which has now reduced to close to zero point 0.5. So it's a commendable reduction in terms of dependency on the crude oil. I'm sure that with this kind of crisis coming in, there has to be there'll be strong inclination not just from India but from rest of the world to find a cheaper or reliable alternative or self-dependent alternative. So India might want to explore more domestic production, or want to go for renewables, or want to go for nuclear power. So that's what has been happening, and we have recently read the headlines about India's getting success in terms of that nuclear power capabilities. So this is another statistic that how LNG and LPG supply would be impacted. I'll just take it forward. So now if you look at a share of select West Asian economies in India's export. So one is that obviously India is importing petroleum and crude products from Middle East, and the impact is felt on our energy cost of import, and which affects our current account deficit, but also our exports. We are exporting roughly 15%, 14.7% of our total exports are there, which goes to the Middle East countries. And those countries are not only able to use the strait for exporting the petroleum product, but also importing critical stuff for their own country. And hence, couple of exports are also getting damaged because of this thing from India. So India has got a double whammy effect. One is that obviously energy shock for importing. Another one is, the export shock timing, because our exports are still pretty large, 15% roundabout of our total export number going through Middle East. Now, if you look at carefully, whenever there is a crude price hike, our GDP growth generally softens subsequently. So it is expected that if the crude price remains higher or elevated, then the GDP growth might also get little bit weaker. Which is there for you. This is a scenario analysis. Like, if the oil price remains at 85 for the full year, then the GDP growth can be still 7% plus. Inflation can be manageable at 4.5% around about. Your current account deficit would be roughly 1.5 to 1.7 percentage of GDP. And rupee can settle between 1991, and the 10-year GSEC number would be close to 6.8 to 6.9. But if it goes above 100 sustainably, then obviously the GDP growth will take a 1 percentage point roundabout or 70-80 bips hit. Your inflation will spike to 6% plus, and your 10-year GSEC can be above 7.2. So that's what the market initially discounted, and that's why there was a huge knee-jerk reaction in the beginning. Now, why we think that, first of all, why we think that the oil above 100 or 120 is not sustainable thing. We'll talk about it in detail. If you look at this, this is very interesting data point. Uh, can anyone in the world afford to have a war for a long period of time? The answer is no. If you divide the world in three parts, first is Western world, second is central, that is your Middle Eastern one, and the third is Eastern world, that is India, China, Japan, South Korea. So now if you look at the Western world first,
एंटायर वेस्ट इज अंडर हैवी डेट, उन लोग का बोरोइंग बहुत ज्यादा है वहां पे। यू नो द इंटरेस्ट कॉस्ट इज roughly 25 to 30% of their total fiscal spend, which is way too high for them to which is way too high for them, because it would be very difficult if the interest cost goes up substantially, because their finances are already squeezed and tight. So if you look at debt to GDP number of US, Canada, everything is above 100. सो जैसे ही क्रूड का भाव बढ़ता है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है, फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ती है, फूड प्राइसेस बढ़ता है, नेचुरली आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में स्पाइक आता है। और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, बॉन्ड यील्ड में स्पाइक आता है, तो ये सारी गवर्नमेंट पैनिक में आती है। एंड उसी का रीजन है कि अपना वॉर, ये वाला जो पीस या जो 2 हफ्ते का जो शांति का जो समझौता हुआ है, दैट इज नॉट बिकॉज कि उनको कुछ और रीजन था। द मेजर रीजन इज दे वांटेड टू कूल ऑफ द बॉन्ड yields, because that affects their direct expenditure substantially. So if you look at this data, 10-year government bonds, यूएस का प्री वॉर पे yield था 3.95, जो स्पाइक होके 4.44 हो गया। दैट्स अ बिग स्पाइक एक्चुअली। कनाडा का भी सेम सिचुएशन था, सो वाज इटली, यूके, फ्रांस। Now the 20-year number and 30-year number, I have not put in the 30-year number, but that's again a very worrisome sign. So larger the tenure, higher is the spike, and impact on the finances is way too high for them to afford. So you can see the 20-year number as well, 4.54 था pre-war yield, जो बढ़ के 5.01 हुआ। It was for every damn country, and that was the reason they came under significant pressure. So they cannot afford the high interest cost, and hence the war has to be concluded as early as possible. और नाउ अभी सेंट्रल रीजन की बात करें, तो सेंट्रल रीजन में तो ऐसा कोई डेट का इश्यू नहीं है। अरब कंट्रीज डोंट हैव दैट कंट्री बिग कंट्री डेट, बट एंड हाई एनर्जी कॉस्ट इज एक्चुअली गुड फॉर देम, बट स्टिल दे डू नॉट वांट हाई एनर्जी प्राइस, बिकॉज एक बार हाई एनर्जी प्राइस ठीक हो गया तो अल्टरनेट्स को बढ़ावा मिलता है। People try for innovation, people try for substitute, people try for something else which might be more cheaper, of course, but also more reliable. And if that happens, it's a structural damage, because once you find the alternative, it remains there forever. So they also know that at $70, $80, it is win-win for everyone. People will not go for aggressive scouting of alternatives, and they would be comfortably using my fossil fuel. So they are also not interested for a high energy cost. Now, Eastern world obviously is not interested, because Eastern world is directly getting damaged because of the sole reliability on the imported Middle Eastern energy. Now, if you look at fertilizer, not just the petroleum product or LNG, but fertilizer also is, getting impacted. So almost 30% of the global fertilizer requirement comes from Middle East, and and that number is यूरिया के केस में 36% है, ammonia के केस में 29%. So that number is pretty large. Now if you look at this, India is roughly importing, share of the fertilizers imported by sea, and which is originated from the Persian Gulf region, वो नंबर roughly 26% है, which is a very big number. हमारा total 1/4 of our fertilizers are getting imported from the Gulf region. So that affects uh, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड मेंटेनिंग। पहले तो उससे क्रॉप प्रोडक्शन भी इम्पेक्ट हो सकता है, और फूड इन्फ्लेशन अगर इंडिया में आता है तो मान लो पूरी दुनिया में आएगा, बिकॉज ये जो एशियन रीजन है विच प्रोड्यूसेस अ लॉट एंड एक्सपोर्ट्स अ लॉट, दे वुड बी इम्पेक्टेड, एंड देन द एंटायर वर्ल्ड हैज टू पे द प्राइस, which again people do not want. Now, this is again a data that India imports roughly 25% of the fertilizer requirements from West Asian countries. ऑल्सो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए एलएनजी एज अ फीड स्टॉक यूज होता है। एलएनजी का भी अगर सप्लाई कम होता है तो भी फर्टिलाइजर इम्पैक्ट होता है। दूसरा डेटा ये है कि वेन एवर गैस प्राइसेस गोज अप, फर्टिलाइजर प्राइसेस आल्सो राइजेस। तो जैसे ही गैस प्राइस ऊपर जाता है, आपका यूरिया और बाकी सब जो फर्टिलाइजर्स है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, जो अगेन पीपल डू नॉट वांट दैट इन्फ्लेशन टू
कम। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट एनर्जी प्राइस हमेशा एक स्पाइक होके फिर इवेंचुअली नीचे ही आता है, और नीचे आता है तब सब कुछ सेटल होता है। दिस इज अबाउट एलएनजी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मार्केट ने जब फर्स्ट टाइम वॉर स्टार्ट हुआ ना, तो पहले 15 दिन में जो ट्रम्प के जो ट्वीट थे, उसको मार्केट ने काफी सीरियसली लिया। रिएक्ट भी बहुत फास्ट किया क्योंकि हॉर्मुज बंद हो गया, मिडिल ईस्ट के काफी यूएस बेसिस पे अटैक हुआ, एंड क्रूड प्राइसेस में सडनली बहुत बड़ा स्पाइक आया, तो निफ्टी 2000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आ गई। 25,100 से 23,100 का मार्केट हो गया विद इन 15 डेज। Now, if you look at the language of the tweet, it was obviously scary. It was difficult for the market to understand and absorb. बट मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई चीज रिपीटेटिव होती है ना, मार्केट एक बार डिस्काउंट करता है वो चीज को, वही रिस्क फैक्टर को मार्केट बार बार डिस्काउंट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड का वेव 1 आया था, तब जो हिट आया था मार्केट में, वैसा सेकंड वेव में उतना मार्केट में रिएक्शन नहीं था, और थर्ड वेव में तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं था। सो सेम न्यूज के पीछे मार्केट बार बार नहीं गिरता है। रशिया यूक्रेन वॉर का इनिशियल रिएक्शन था, उसके बाद सेम वॉर अभी भी चल रहा है। ऑब्वियसली वो एक अलग टीरेन था, वहां पे एनर्जी का इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था। यहाँ पे स्ट्रेट के सीधा इम्पैक्ट है, स्ट्रेट का सिग्निफिकेंस हमने देखा कि कितना बड़ा वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट होता है वहां से। और वो अगर बंद होता है वॉर के लिए वजह से, तो ग्लोबल रिसेशन आता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन आता है, एंड बॉन्ड यील्ड स्पाइक होते हैं। तो nobody wants that, nobody can afford that. So basically after 15 days this is another tweet जो और scarier था। मतलब the last tweet was that the whole civilization will die tonight. I mean, coming from president of world's largest democracy and the most powerful country on the earth, and that is saying that the entire civilization will die tonight, still market did not react. On the contrary, market fell only 900 points during the second 15 days, and then actually it recovered completely, and not only recovered, it rose more than the fall it witnessed for the last 15 days, and it is now above 24,000 level. So according to us, we are at the peak of the geopolitical uncertainty as of now. Market has started absorbing the risk factors comfortably, and we feel that it's gradually domestic fundamentals and corporate earnings will drive the market going forward. Probably we are at the peak of the geopolitical uncertainty, and market has already discounted most of that. Having said that, we are at 24,000 recovered किया and 22,500 जाके can we go back to the 22,500 23,000 level? Answer is yes. But will we stay there forever or for, let's say, good amount of time? Answer is absolutely no. So that is the opportunity we are looking at, and we tried to communicate to our investors um, uh, that these are the levels you should always capture in. And the intensity of the tweet has further increased. The language quality of the language got way harsh, and still market did not react. दिस इज द निफ्टी रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, मतलब आईएनआर रिटर्न्स नहीं, यूएस डॉलर के रिटर्न है। तो निफ्टी इंडेक्स यूएसडी में देखे तो आप देखो वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आ गया है, एंड जो उसका आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो ऑलमोस्ट एट बॉटम पे है। जब जब भी वो आरएसआई ये वाली लाइन के आजू बाजू गया है, वहां से मार्केट में डॉलर टर्म्स में रिकवरी आया है। तो उसका दो सिग्निफिकेंस होता है। एक होता है कि ऑब्वियसली निफ्टी आईएनआर में बढ़ता है, और दूसरा रुपी अप्रिशिएट होता है, तब जाके ये डॉलर रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं। सो 4.5 साल से एफआईआई का यूएसडी निफ्टी रिटर्न्स आर ऑलमोस्ट फ्लैट। नाउ इफ यू लुक एट द कैलेंडर ईयर 26, मतलब जनवरी से लेके अभी तक का जो नंबर है, उसमें ग्लोबली सारे मार्केट्स में तेजी आया है। मतलब इंडियन मार्केट्स आर डाउन 19%, बट इफ यू लुक एट ब्राजील, साउथ कोरिया, ताइवान, यूके, जाप, सो सब जगह पे थोड़ा ग्रोथ आया है, और स्पेशली ब्राजील, साउथ कोरिया, ताइवान में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। एंड उसके सामने आवर मार्केट हैज बीन सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड। वन ऑफ द मेजर रीजन इज एफआई आउटफ्लो। उन्होंने सब्सटेंशियल $34 बिलियन का आउटफ्लो किया है बिटवीन कैलेंडर ईयर 24 टू कैलेंडर ईयर 26 टिल डेट। एंड ऑल्सो मार्च महीने में अकेले में उन्होंने लगभग 90,000 करोड़ का एक
पैसा निकाला है. Now the key question one would ask is that why are they selling? Because RBI का initiatives था repo rate cut, CRR cut, liquidity injection, OMO, अपने गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में राहत दी, जीएसटी कट किया, फिर भी वो क्यों बेच रहे थे? सो बड़ा सिंपल सा उनका आंसर था दैट वी लुक एट इंडिया एज वन ऑफ द स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो. We are getting a much better growth in Taiwan or Brazil or South Korea or to some extent Hong Kong, China. And those markets are relatively cheaper than India. They are offering more than three times earning growth because of AI related opportunities. All of a sudden, because of the global AI spend, for example, यूएस में जो हाइपरस्केलर्स है, उन्होंने एआई के लिए 350 या 380 बिलियन डॉलर का स्पेंड किया था लास्ट कैलेंडर ईयर, एंड दिस ईयर दे आर लाइकली टू क्रॉस $650 बिलियन प्लस. द सेम नंबर is from rest of the world as well. So basically यहाँ से इतना बड़ा एआई कैपेक्स है, और उसके जो मेजर बेनिफिशियरी है वो ऑब्वियसली ताइवान, टू सम एक्सटेंट हांगकांग, चाइना एंड मेजरली साउथ कोरिया. सो वहाँ पे एक तो अर्निंग्स ग्रोथ सब्सटेंशियली ज़्यादा चला, वैल्यूएशंस कम थे, और एफआई एक्सपोजर रिलेटिवली म्यूटेड था. इंडिया वाज वे टू ओवरवेट फॉर देम. सो आई थिंक नाउ they have reached to some fairly valuation point of view where they can think about not selling aggressively. I'm not saying they would come back. They would only come back when our earnings would look superior to them compared to rest of the world. And also, if they get the clarity about the INR, if they feel that the crude is about to fall substantially and INR is about to appreciate, in that case, our corporate earnings will go to 14-15% number. In that case, they would come back massively. And but when and how it is going to happen, only time will tell. But looking at the current India valuations, I think it is not imperative for them to sell very aggressively from now on. Also, those markets are not very cheap anymore, like South Korea, Japan, or Taiwan or Brazil. So obviously, there also they need to have some restraint. So that's what is the assumption. Now, if you look at the BSE 500 numbers, this is since 26 September 2024 जब निफ्टी पिक आउट हुआ पहली बार, वहां से 15% BSE 500 टूटा है. इसमें डिविडेंड भी आ गया, वरना फॉल 16.5-17% के आजू बाजू है, और उसमें सिर्फ 23% स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. नाउ 77% स्टॉक नेगेटिव है. उसमें आप देखिए तो 50% से ज्यादा गिरने वाले 72 स्टॉक्स है, 40 से 50% गिरने वाले 64 है. ऐसे करते करते 0 to 20% गिरने वाले 121 है. सो टोटल 385 स्टॉक्स हैव जनरेटेड नेगेटिव रिटर्न विथ वेराइटी ऑफ डिग्रीज ऑफ फॉल. तो लोगों का पोर्टफोलियो भले इंडेक्स लेवल पे 15% फॉल है, but I have seen and I have observed with many of the people who are showing their portfolios to us, the fall is much, much higher, cut is much, much deeper across the board. Now, how Credence Wealth has navigated this tough time in the last 2 years. So this is there for you. These are the returns, net of fees and charges. Now, if you look at this, index return is positive 2.65 in last 2 years. So basically point to point, March 24 to March 26. So 2 साल हो गए. Index is positive 2.65. This is BSE 500 TRI. All weather is positive 7.55. Diversified is positive 4.37. And business cycle fund is positive again 7.47. So there has been a significant outperformance versus market in this choppy market. So now if you look at the peak, सितंबर में जब बाजार पिक आउट हुआ, वहां से जैसे मैंने बताया यहाँ पे आगे दैट मार्केट 15% गिरा था. तो यहाँ पे इफ यू लुक एट ऑल वेदर फॉल इज जस्ट 5.57. इट्स अ सिग्निफिकेंट अल्फा. Diversified fall is close to 10%, which is again a 5% alpha, which is significant number. Business cycle has fallen slightly higher. And ICE Growth Fund is just 8% down versus 14.6% because that fund launch date is slightly 1 week after the Nifty picked out.
So again, a significant alpha versus market fall. So we have fallen much lesser in the last 1.5 year. Also, in the last 2 years, we have significantly outperformed the market. Now, जब सितंबर में 2024 में निफ्टी पिक आउट हुआ वहां से, इफ यू लुक एट केयरफुली, देयर इज ओनली वन सेक्टर, मेटल सेक्टर, which has generated 12% return. Second least impacted is pharma, 4%. Then our all-weather fund, 5.6. Bank Nifty, 8% fall. ICE Growth Fund, again 8% fall. Diversified, 10.5%. Infra Index, 11%. Business Cycle, 11.5%. And then Nifty 50, 13%. Auto, 14%. BSE 500 TRI, 15% fall. Oil and gas, 16%. Consumer, 24%. FMCG, 31%. IT, 31%. I have not added couple of other indices like defense and all, but the fall is very significant. So basically, कहीं पे भी मार्केट में कहीं पे भी आप पैसा डालते हैं, आपका हिट आना वो कंफर्म था, लेकिन वी हैव वेरी सिग्निफिकेंटली आउटपरफॉर्म द मार्केट बाय वे ऑफ कैप्चरिंग the winning audience and sector rotation and all, and that, as a result of that, we have navigated this brutal crisis quite well. अभी एक, दिस इज जस्ट एक इलस्ट्रेशन। पिछले 2 साल से ये हो रहा है दैट मार्केट में, लार्ज कैप में आप बैठे हो या मिड कैप में बैठे हो, स्मॉल कैप में बैठे हो, अगर आपके पास अर्निंग्स विजिबिलिटी नहीं है तो आप कैसा भी अच्छा बिजनेस हो, वो बोलते हैं ना कि आप कोई सा भी बिजनेस अच्छा ले लो, बट अगर रॉन्ग वैल्यूएशन में एंटर हो गए ना तो आप डेट मार्केट के रिटर्न को भी बीट नहीं कर सकते हो। तो वही चीज आपके सामने है। द कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, आई हैव पिक्ड अप randomly one company from different sectors, and if you look at the 5 year CAGR, it's pretty pathetic. And the sectors which were actually high flyers earlier, they also fell substantially from their highs. So the market has been very in a brutal in last 1.5 2 years. Now if you look at the Nifty 50 scenario analysis, हमारा ऐसा मानना था कि 1280 रुपये का अर्निंग होगा, उसके बेसिस पे 23,040, सो बेसिकली और 28,160 का रेंज आता था। अभी बिकॉज ऑफ दिस वॉर, और बेसिकली मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हम 23,000 भी जाएंगे, हम 24,400 पे ही रुक जाएंगे। बट उस टाइम पे वो जो एजम्पशन था उसमें वॉर कहीं पे भी पिक्चर में नहीं था। So it's like out of syllabus event which has happened, and also the significance has been pretty intense. So in this normal situation, 24,400 was the range, but with this kind of scenario where there might be a cut in the corporate earnings because of the high energy cost. अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें एक क्वार्टर के रिजल्ट में फिर भी इतना नहीं दिखेगा क्योंकि कई लोगों के पास इन्वेंट्री पड़ा था, कई लोगों का रॉ मटेरियल कॉस्ट सस्ते भाव का पड़ा हुआ है, और उसके बाद एनर्जी इनपुट कॉस्ट बढ़ा है। तो या किसी का ऑलरेडी काफी ट्रांजिशन में शिपमेंट था, वो हो गया। सो अभी अगले क्वार्टर में मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो अगर वो नंबर्स कटते हैं और वो 1216 होते हैं, जो मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में हो सकता है, तो 21,888 और ऊपर में 26,752, दैट इज द रेंज वी गेट। बट दिस इज लाइक अभी आप यहां से ये सोचो कि 22,500 तो हम वैसे भी जा चुके थे, 22,500 से 21,890 कुछ बड़ा बात नहीं है। सो वी वर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड देन वी बाउंस बैक फ्रॉम दैट लेवल एंड वी आर नाउ क्लोज टू 24,000। तो मेरे हिसाब से आप सबको मेरी गुजारिश है, जो आप मीडिया में सुनते हो, स्ट्रेट के ऊपर पढ़ते हो, वॉर के लिए पढ़ते हो, मेरे को लगता है कि जैसे हम कोविड में भी नंबर ऑफ काउंट्स देखते थे ना, कितने लोगों का क्या कोविड हुआ, वो धीरे धीरे देखना आपने कम किया। वैसे यहाँ पे वॉर की टाइमलाइन और वॉर रिलेटेड न्यूज़ को थोड़ा इग्नोर करो, पे फोकस ऑन फंडामेंटल्स, पे अटेंशन ऑन दैट। आई थिंक दीज आर द लेवल्स यू शुड कीप इन योर माइंड। बी वेरी ग्रीडी एंड वेरी एग्रेसिव, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे मार्केट में 2 साल के पेन के बाद अगर आप पैसा नहीं डालोगे ना, तो यू विल बी मिसिंग अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन कमिंग ईयर्स। एंड मेरा ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है कि जब भी ऐसा पैनिक होता है, तब अगर आपने, मान लो आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो, और भले आपने 5 रुपया नया डाला या 10 रुपया भी नया डाला, बट वो 10 रुपया बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है टू एनहेंस योर CAGR for remaining 100 rupees. Incremental 10 rupees would also contribute too big
for expanding your CAGR for the earlier 100 rupees because the entry point is very, very juicy. So please keep that point in your mind. Now, these are the time period wise return for all our products. So we'll start with all weather. Last 12 months, current financial year as on 31st March has been pretty strong for the fund. Market was negative 3%, fund was positive 6.4%. Uh, and remaining numbers are there for you to look at it for, let's say, 36 months, 48 months, and since inception. So we are in alpha all across time period. We have generated return higher than market for most of the time period. Now, this is for diversified fund. The current year has been compared to all weather, it is slightly less, but still a significant alpha over benchmark. And the fund has been consistent outperformer all across time period and generated significant alpha since inception. Now, if you look at business cycle fund, last 12 months was slightly tricky because of the nature of the product. Too much exposure to small and mid cap in this product has also costed little bit compared to diversified and business cycle, but that's the nature of the product, and that's where the opportunity also kicks in whenever there is a turnaround. So if you look at last 24 months, it is still in an alpha. Last financial year was very good. Current financial year, it is still good compared to market, and since inception, it is positive alpha. Now, ICE is something which we launched at the peak of the Nifty. Last 12 months, the fund has still generated a positive return versus negative 3.12. And since inception, it is just down by 5.43 and markets are down close to 10%. But mind you, this is based upon assumption that 100 rupees was completely invested into equity, that is ICE growth fund, where we took actually 80 rupees into Wealth Prism and 20 rupees into equity, and gradually we shifted to ICE. So those returns have stopped showing it, but those returns are far, far superior. So it could be as good as zero or positive return compared to negative 5.43, what we are seeing right now in front of you. So yeah, that's all from my side. Now the forum is open for Q&A. Whatever questions you may have, please start writing in the chat. I would be very happy to answer with best of my ability. So first question has come. What about the banking sector in this crisis? देखिए, बैंकिंग सेक्टर का कोरिलेशन क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ सिग्निफिकेंटली नेगेटिव है. सो हायर इज द एनर्जी कॉस्ट, नेगेटिव इज फॉर द सेक्टर. उसका मेजर रीजन क्या होता है कि जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ता है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है. सो फॉर एवरी $10 इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, योर करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गोज अप बाय 40 बेसिस पॉइंट, 0.4%. और जैसे ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, आपकी करेंसी वीक होती है, दैट इज आईएनआर वर्सेस यूएस डॉलर, जो हमने देखा. अभी करेंसी को वीक होने से बचाने के लिए आरबीआई विल स्टार्ट इंटरवीनिंग. तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर बेचता है और रुपीज लेता है. सो सिस्टम में से, बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट सिस्टम में से बैंकिंग आईएनआर की जो लिक्विडिटी वो सक होती है और लिक्विडिटी टाइट होती है, उससे मनी मार्केट रेट ऊपर जाते हैं, विच इज नेगेटिव फॉर द बैंक्स. So एक tighten up the liquidity is negative for the banks. That's one thing. And second thing is that कि overall economic growth slow होता है, तो chances of NPA increases substantially, which is another sentimentally negative. तो जब भी आपका क्रूड प्राइसेस रिवर्स होता है, तब बैंकिंग सेक्टर इक्वली रिवर्स नेगेटिव कोरिलेशन है, तो ऊपर की बाजू पार्टिसिपेशन भी उतना ही जोर से आता है. सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेरी ऑन द बैंकिंग सेक्टर. Do you believe current India growth is being overestimated due to consumption fueled by leverage rather than income quality? See, मेरे हिसाब से इंडिया
का जो जीडीपी है उसमें 56% इज ड्रिवन बाय प्राइवेट कंजम्पशन. दैट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन. एंड प्राइवेट कंजम्पशन आइदर लीवरेज से आता है या तो इनकम कंफर्ट से आता है. अम, वो देखे तो धीरे धीरे लीवरेज बढ़ रहा है. मतलब हाउस होल्ड डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग, बट इट इज नॉट वेरी अलार्मिंग लाइक अदर कंट्रीज. बट यस, द लीवरेज हैज प्लेड अ वाइटल रोल फॉर कंजम्पशन. अभी इंडिया का जो कंजम्पशन है वो टाइम बीइंग क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्योंकि एआई की वजह से अगर जॉब लॉसेस होते हैं एंड जो वाइट कॉलर जॉब्स है जहाँ की सैलरी अच्छी है एंड दे वेर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स फॉर हाई एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन लाइक रियल एस्टेट और गारमेंट्स एंड एपरल्स एंड व्हाट नॉट ऑटोमोटिव्स, तो वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है. But I'm very, very confident that other avenues are equally catching up. For example, we'll talk about it, let's say, very quickly about textile. So, अब imagine करो multiple years से we had a tax disadvantage versus others in terms of European markets, UK और even US. वो completely level playing field में convert हो रहा है. And India has a very strong integrated textile capabilities. सो अगर वो सच में लिवरेज प्ले होता है तो इट वुड बी अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज आप सोचो कि $300 बिलियन का एक्सपोर्ट चाइना करता है जहां पे एजिंग पॉपुलेशन है, कॉस्ट बढ़ रहे हैं. सेकंड बेस्ट इज $40 बिलियन. मतलब कहाँ $300 बिलियन, सेकंड बेस्ट इज $40 बिलियन बांग्लादेश, एंड $38 बिलियन इंडिया, एंड $36 बिलियन राउंड अबाउट इज वियतनाम. So then obviously other small countries are there. So now the बांग्लादेश जो 40 बिलियन सेकंड नंबर पे, वो पूरा अप्रैल करता है, उसका वैल्यू चेन पे कोई कंट्रोल नहीं है. मतलब फाइबर टू फैब्रिक का. सो ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स के है, कैपिटल गुड्स के है, पावर एंसिलरीज के सेक्टर्स है जहाँ पे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी. ऑटो में आप देखो, मारुति के नंबर्स देखो आप, एवरी मंथ एक्सपोर्ट इज ग्रोइंग सब्सटेंशियली. So basically, one sector is going down and affecting, let's say, growth, pulling down the growth little bit. There are other avenues coming up as well. So, but yes, consumption would be challenge because of AI related disruption at a higher end. But जो mid market है या mass market है, वहाँ पे तो obviously government policies and interest rate cycle impact करती है कंजम्पशन को. जो नेचुरल साइकिल है वो चलता रहता है. एक क्वेश्चन है. ओके, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन कार्तिक भाई, थैंक यू. थैंक यू भूषण जी. विच सेक्टर्स टू इन्वेस्ट एट द करंट वैल्यूएशन? सी, हमारा पोर्टफोलियो है वो प्रिडोमिनेंटली मेटल्स, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, ऑटो एंसिलरीज एंड लिटिल बिट केमिकल, टेक्सटाइल्स, पावर एक्सिलरीज उसमें बैठा हुआ है. एंड वी वुड कंटिन्यू टू बिलीव कि यही सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. डिफेंस के ऊपर क्वेरी आई है. सी, ये सेक्टर बहुत अच्छा है, लॉन्जिटिविटी है, रनवे फॉर ग्रोथ है. लेकिन देर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच बिटवीन द वैल्यूएशंस what is it was sitting upon 2 years ago and the earnings, immediate earnings delivery, उसमें मिसमैच था. मतलब आपका ऑर्डर बुक अच्छा है, एग्जीक्यूशन आपके हाथ में नहीं है. कई बार बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स होते हैं डिफेंस के, तो आपकी अर्निंग्स थोड़ी पोस्टपोन हो जाती है, बट मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करके बैठा हुआ था, तो एक थोड़ा सा उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है. आई थिंक द करंट लेवल्स आर प्रेटी अट्रैक्टिव एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे रनवे फॉर ग्रोथ इन दिस सेक्टर इज नो ब्रेनर. How are you stress testing the portfolios against a scenario where income growth slows but consumption remains elevated? सी, बेसिकली यहाँ पे क्या आप बोलना चाहते हो कि आपकी इनकम स्लो डाउन होती है और खर्चे कम नहीं होते, तो अल्टीमेटली आपका कम अर्निंग्स में कहाँ पे हिट आएगा? सो हमारा जो पोर्टफोलियो करंटली है ना, दैट इज वेरी लेस एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ सिनारियो, एंड वी आर मोर कीन टूवर्ड्स सेक्टर्स विच आई जस्ट मेंशन, जहाँ पे ऐसा प्रोबेबिलिटी अर्निंग हिट होने का कम है. But yes, your point is very valid, and we have to pay a lot of attention to that scenario shaping up.
What is your viewpoint on gold and silver? So silver was a very remunerative trade for us for all weather, which delivered a massive alpha. We converted part of that to the gold at certain level, and we are in the money. So I think, given a choice, I would put my finger on gold versus silver as of now. And the relevance of gold is way too high in one's portfolio forever because of not the de-dollarization but diversification away from the dollar or dollar nominated assets, and proxy against currency devaluation and inflation hedging. So I think, 40 to $100 an ounce is a level where if someone is really keen can take a significant exposure. सो 4,000 से 4,200 का लेवल है जो मुझे बहुत कंफर्ट देता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म मनी टू बी पार्क्ड इन. Other than equity, which other asset class? I just spoke about gold. Rest, I don't have any clarity for other asset class as of now. What would be the next two sectors for FY 26-27 that would generate highest return as the sector changes every year? सर ये तो है ना, बड़ा डायनेमिक है. अभी आज की तारीख में जो सेक्टर्स जो मैंने बोले वो दिख रहे हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुली कीप स्क्रूटिनाइजिंग. अब भाई जोर से मान लो वॉर खत्म होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है, जोर से एनर्जी प्राइसेस टूटते हैं, तो यहाँ से बैंकिंग एनबीएफसीज में बहुत अच्छा क्विक मनी बनेगा. बट देन ऐसा होना चाहिए. सो सब कुछ बहुत ही मूविंग एलिमेंट्स है इसमें, तो सब कुछ एकदम से नीट एंड क्लीन ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ नहीं होता है. सो इट दैट्स यू हैव टू लिव विद दैट. Is the question that last time during Russia war, the oil remained high for about 4-6 months and market took about 8 months to recover. How is it this time? सो आई थिंक यहाँ पे ऑयल जो है ना, मुझे लगता है थोड़ा और लंबा रहेगा ऊपर की बाजू बिकॉज ऑफ दो रीजन. एक तो ये वॉर इमीडिएटली कुछ फुल फ्लेज नहीं रुकने वाला है. I think one of the partner like Israel will keep on fighting, and it will go for relatively longer time than what one is thinking. Obviously, US might want to take it away or reduce it down, but the world war with Middle East will not die down immediately. Secondly, the Hormuz है वो open भी होगा तो with some transition fees, transit fees के साथ open हो रहा है. Thirdly, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, काफी एसपीआर जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हम बोलते हैं, काफी कंट्रीज ने उसको अनलिश किया, तो वो भी सब रिप्लेनिश करने के लिए आएंगे वैसे जैसे का जब भी क्रूड प्राइसेस और सप्लाई नॉर्मलाइज होता है. तो मेरे हिसाब से जो अर्ली लेवल जो 60-70-80 डॉलर था ना, वो अभी न्यू नॉर्मल हो जाएगा 70 to 90-95. सो बेसिकली $20 का स्ट्रक्चरल शिफ्ट अभी हो गया है पर बैरल फॉर टाइम बिंग. एंड हमारा जो मार्केट है वो वेरी क्विकली रिकवर नहीं होगा, बट नीचे के लेवल पे सॉलिड वैल्यू बाइंग दिखता है जो हमने लास्ट वीक्स में ऑब्जर्व किया. एंड अच्छे सेक्टर्स हैं, अच्छे स्टॉक्स में बैठेंगे तो सिग्निफिकेंट रिटर्न्स कंपेयर टू मार्केट बन सकता है इन नेक्स्ट 12 to 14 मंथ्स, क्योंकि दो साल हो गए ऑलमोस्ट जहाँ पे काफी पेन आ चुका है. एंड वैसे देखा जाए तो मार्केट्स आर एट close to 18.75 to 19.75 depending upon the earnings you look at in the Nifty. तो 18.75 to 19.75 टाइम्स पे अभी मार्केट ट्रेड हो रहा है. कोविड पे 17 टाइम्स पे मार्केट बॉटम हुआ था, लेकिन दैट वाज लाइक वेरी क्विक. कैन इट कम? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट क्लियर. इट डिपेंड्स अपॉन कि क्रूड बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, वॉर बहुत इंटेंसिफाई होता है, स्ट्रेट बहुत टाइम के लिए बंद होता है, तो हम उसको टच करके रिवर्स आ जाएंगे, बट देन विल नॉट स्टिक टू दैट. बट पॉइंट इज दैट, आर यू willing to participate and do the scalp trading? If you are interested, you will make lots of money, lots and lots of money. So that's the answer for the market. आर वी फाइंडिंग सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल कैप और लार्ज कैप लुक्स बेटर? आई थिंक ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप अच्छा है या स्मॉल कैप अच्छा है, दोनों में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी है. सिलेक्टिव लार्ज कैप्स आर ऑफरिंग गुड अपॉर्चुनिटी एंड सिलेक्टिव मिड एंड स्मॉल कैप्स आर आल्सो ऑफरिंग एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी. और जो दिख रहा है,
Okay. Could you highlight your views on CDMO sector considering significant exposure in the portfolio? So yes, we have been holding on this sector for a long time now in the portfolio, which has also done a significant job of protecting downside and capturing upside. We are closely monitoring the monthly export numbers and quarterly numbers. As of now, the structural tailwinds जो सोच के हमने ये एक्सपोजर लिया था वो इंटैक्ट है. और short term volatility because of this trade transit and all might come, but medium to long term opportunity remains very, 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 very strong. And hence, we would love to have some exposure in the sector. अभी high है, can be at the same level, can move couple of percentage point here and there, but we would stick to the sector exposure. So there is a question about ICE that November 25 में डाला है and it has remained red. What do you feel? Sir, we'll have to look at with the market how we have and also it's a very short window now to talk about. But we are very, very hopeful that the way we have navigated this difficult time and outperform the market, and that's what our history is, and that's what our strong intention is. That's what we intend, that we want to generate return higher than market, net of fees and charges almost every year. So that intent is there, and we'll continue to aspire for that. Given the current scenario, is there still room for uncertainties and equity? Whether equity should be added gradually rather than going long all in? सर देखो, ये अपने अपने रिस्क एपिटाइट के ऊपर है. इफ यू आस्क मी, 22,500 से 23,500 के बीच में अगर लेवल आता है तो आई वुड लाइक टू गो विथ 70-80% एक्सपोजर. अभी भी आप पैसा डालते हो तो सी बेसिकली अभी क्या हो रहा है ना, अभी 24,000 का निफ्टी आ गया है. 23,500, 23,200 आ सकता है आने के लिए, मतलब एक आध दो खराब ट्वीट, एक आध दो एक्टिविटी ऐसा हुआ तो आ जाएगा, बट देन मुझे नहीं लगता कि वी आर गोइंग टू सी अ सब्सटेंशियल करेक्शन. दैट्स द नंबर वन वर्डिक एज ऑफ नाउ. सेकेंडली, अगर मान लो कि आपको, चलो मैं कोविड वाला एक एग्जांपल देता हूँ जो मुझे चिराग भाई ने एनलाइटन किया था. कि कोविड का जब पहला फॉल आया था ना 10% का, अगर उसमें किसी ने पैसा डाला, उसके बाद 25%, मतलब टोटल 15% और गिरा, तो 25% फॉल आया उसमें किसी और ने पैसा डाला, और उसके बाद और गिरा करके 40% गिरा, लेकिन वहां पे किसी का हिम्मत नहीं था, या तो पैसा खत्म हो गया था, ऐसा मानते हैं. तो जो पहला 10% गिरने के बाद जिसने लिया था ना, उसका भी 9 महीने में 35% रिटर्न था, और जो 25% नीचे में लिया था उसका प्रॉब्ली 50-55% रिटर्न था. सो बेसिकली आपको कोई नुकसान नहीं है, अगर आप 1-2 साल के व्यू में बैठे हो तो ये लेवल पे भी पैसा बहुत बनेगा. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे डाउनसाइड भी कैप्चर करना है, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी प्ले करना है, तो आप कर सकते हो. बट देन यू विल हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड दैट अगर वो नहीं होता है तो आपको एक्सेप्ट करके ऊपर के लेवल में भी ऐड करना पड़ेगा. सर इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब 0.25 था, जो सीधा 1% हो गया, तो 4 टाइम्स बढ़ गए. दैट्स व्हाट द एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट. एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइज इन द इंश्योरेंस प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म. तो जैसे मैंने बताया कि आपका वेसल वैल्यू का 25, मतलब जो वैल्यू था उसका प्रीमियम आपको 0.25% देना था, उसकी जगह पे भी 1% देना पड़ रहा है. हाउ डू यू लुक एट स्मॉल एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट लार्ज कैप? सर देखो, इसमें क्या होता है कि स्मॉल एंड माइक्रो कैप में एक ही जगह पे लार्ज कैप के सामने तकलीफ ज्यादा आती है, एंड दैट इज लिक्विडिटी. अगर मान लो कि आप देखते हैं कि पिछले 2 साल से, फॉरगेट अबाउट स्मॉल कैप, कोई भी कैटेगरी में आपके अगर एसआईपी चल रहे तो उसके रिटर्न्स नहीं है ठीक ठाक. एमएफ में 60%, 70% ऑफ द ईयूएम इज अंडर परफॉर्मिंग द, ताकि पूरी इंडस्ट्री का इज अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क्स. उसमें अगर किसी ने ये सोचा कि अभी मुझे स्मॉल एंड मिड कैप का और स्मॉल एंड माइक्रो कैप का एसआईपी बंद करना है, या तो स्टॉप रिड्यूस करना है और नया पैसा नहीं डालना है, तो बेसिकली अगर वहां पे इन्फ्लो कम हो गया ना,
तो उसका कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जो हमने 16 17 18 19, मतलब 17 18 19 3 साल में देखा प्री कोविड। सो लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। अभी एज लॉन्ग एज वो नल खुला है और लिक्विडिटी आ रहा है, स्मॉल कैप में कोई इश्यू, माइक्रो कैप में कोई बड़ा इश्यू नहीं लग रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक, नॉट एट द इंडेक्स लेवल। क्योंकि मैंने देखा है कि कितना भी अच्छा धंधा हो, कितना भी अच्छा अर्निंग डिलीवरी हो, बट एक बार नल बंद हो गया और पैसा नहीं आता है ना, लैक ऑफ बाइंग इटसेल्फ इज अ सेल सिग्नल। तो वही एक एक इश्यू आता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई स्मॉल एंड माइक्रो कैप में भी ऐसा फियर फैक्टर रखना चाहिए। सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी लग रही है, काफी स्टॉक्स अभी जैसे कोई 12 14 15 16 18 के पी पे आ गए विथ अ वेरी सुपीरियर अर्निंग ग्रोथ एंड गुड बैलेंस शीट एंड रिटर्न रेशियोज। तो डिपेंड करता है आप कैसे पॉकेट में बैठे हो। Should we invest in IT sector now because it is already down? This is a very interesting question. See, valuation wise, they are very cheap. बट सामने आप ये देखो, अर्निंग्स विजिबिलिटी इज ऑल्सो गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। सो आपका टीसीएस का रिजल्ट आया, नंबर वॉज प्रिटी ओके इन लाइन विद एस्टिमेट, बट द कमेंट्री वॉज वीक एंड द न्यू volume growth and the new orders and all is slightly getting question mark. Also, BFSI sector, banking and financial services and retail, ये दो सेक्टर है ना, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वहां पे अगर वहां की कॉर्पोरेट्स ये सोचती है कि बिकॉज ऑफ एआई रिलेटेड अनसर्टिनिटीज और बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज, हमको जो आईटी स्पेंड करना है बीएफएसआई में या रिटेल में वो थोड़ा कम करना है, या तो वी वांट टू जस्ट रिव्यू अवर एग्जिस्टिंग स्पेंडिंग, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। सो दैट इज द रीजन मार्केट इज रियली nervous. One is that the demand slow down because of war, because of uncertainty in the end sector, and also disruption because of the technology innovation through AI. So I think we were constructive in between. हमने ITBs लिया, we went up, we saw the inflow, I mean, mark to market gain भी आया 10 12%। And then finally when the anthropic का news आया, we realized that okay, there is no point now fighting against it. And despite of buying at lower level, and despite of buying after 3 years of or 4 years of underperformance, we still choose to vacate the position. And it was a very difficult but brave call, and उसके बाद वो और 15% 16% इंडेक्स नीचे गया। सो बेसिकली यहाँ पे अभी हमारा एक्सपोजर बहुत कम है, एंड वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द एक्सपोजर एज ऑफ नाउ। So how do you keep the stop losses on your investment you make and look for other performing stocks? It's a consistent process, sir, or madam, because I don't read the name. It's anonymous. So यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको आईटी का अभी जस्ट एग्जांपल बताया, कई जगह पे हम ऐसे बिजनेस पे कॉल लेते हैं। सो वी हैव टू टेक द हार्ड स्टॉप the moment we realize we have made a mistake, or there has been a unforeseen circumstances which never was foreseen earlier, and it's out of the syllabus kind of a risk factor, and it is a hard time for you to take action, we do take action, and we keep on searching for other opportunities. That's how we make better return than the market. It's a continuous process. In an environment where the mid-skill job stability is uncertain, हाउ शुड एसेट अलोकेशन इवॉल्व फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रिजर्वेशन? सर देखिए, अगर आप जो मिड स्किल बोल रहे हैं ना, वो ज्यादा करके आईटी साइड में है, बाकी कोई जगह पे ऐसा कोई जॉब लॉसेस है नहीं। उसके सामने बहुत जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है ऑन द अदर सेक्टर्स। As far as asset allocation is concerned, it depends upon your risk ability, risk appetite, your income flows, and your age factor. So usually we suggest that for that you have to do the brainstorming with the team. But equity exposure is must to survive for better lifestyle, because the way I am seeing the world, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन आने वाला है और बढ़ के आने वाला है। एंड
उसके सामने आपको प्रोटेक्शन के लिए कोई और चॉइस नहीं है, बिकॉज द रियल रिटर्न्स आर नेगेटिव इन द डेट मार्केट और दे आर ऑलमोस्ट मीडियोकर. सो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स आर एक्चुअली नेगेटिव. सो अगर आपको इन्फ्लेशन को लाइफ लॉन्ग बेट करना है तो देर इज नो चॉइस बट टू हैव स्ट्रॉन्ग एसेट एलोकेशन फॉर इक्विटी. एंड ये जो इन्फ्लेशन आने वाला है जो मैंने बोला उसके मल्टीपल रीजन है. एंड we are already witnessing the spike in the bond yields, and market is giving the verdict. And I think it's going to be very sticky this time than just transient. What is your thought on energy stocks, including renewables and capital market stocks? So, capital market stocks have been beaten down because of the market uncertainties. It will fly back again with the market, which looks like most of them have been bottomed out. They are excellent businesses, very, very strong balance sheet and return ratios, and have generated reasonably poor returns in last 2 years. So, I think they should be doing much better in the coming 2 years. That's what I feel. Energy and renewables, selective basis, yes, you can take exposure. Renewables, particularly on the solar side, now certain segments have started witnessing a good value and they are coming into the comfort zone. A question: if few in few quarters results are not going to make good numbers, when can we expect good returns if everything else settled? देखिए सर, जब खराब होते हैं ना तभी मार्केट में पैसा डाला जाता है. व्हेन एवरीथिंग इज गुड एंड हेडलाइंस आर गुड, नहीं तब वैल्यूएशन गुड नहीं होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं. सो दैट्स द आंसर फॉर यू. Do you plan to include global ETF for diversification and protect downside? What's the strategy for better downside protection when such black swan event occurs, like moving aggressively to cash and switch back to the equity based on technical analysis? So हम ज़्यादा करके कैश को यूज़ करते हैं सर, बिकॉज ग्लोबल ईटीएफ्स, ग्लोबल मार्केट्स, इतने चॉइस भी अवेलेबल नहीं है और डायरेक्ट हम लेते नहीं है. So, and also we understand Indian market much better than the global market or global micro market. So we would be switching on the cash and playing based upon, not based upon technical analysis but based upon the fundamental studies. एक क्वेश्चन है: डू यू थिंक दैट द डेटा अबाउट जीडीपी पब्लिश बाय गवर्नमेंट इज ट्रस्टेबल? आंसर मेरा ये, क्या चॉइस है आपके पास, ये बताइए. ट्रस्ट करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस है या नहीं है? You'll have to live with that. Obviously, you keep questioning few things and you probably try to discount it in your own way, but you have to take the data from the government publishing agencies. That's all. एक क्वेश्चन है: when will FI come and still they feel India is costly and also high tax structure kind of thing for them at this point of time? देखिए सर, टैक्स का तो अभी कुछ नहीं हो सकता है. जो हो गया गवर्नमेंट ने कर दिया है, उसके साथ ही एफआईआई को जीना पड़ेगा. अभी एफआईआई है ना, कोई भी मार्केट का कॉल लेता है ना तो वो क्यों लेते हैं कि मतलब इफ दे डिसाइड टू लीव द कंट्री and go for other country, obviously the first thing they look at for is a स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द अर्निंग ग्रोथ. एंड उसके सामने रिलेटिवली उनके वैल्यूएशंस कैसे हैं. अभी आप ये सोचिए कि दे सोल्ड आउट चाइना लेफ्ट राइट एंड सेंटर फॉर मेनी मेनी ईयर्स, बिकॉज वहां पे अर्निंग ग्रोथ था ही नहीं, बैलेंस शीट बिगड़ती जा रही थी, गवर्नमेंट बहुत ओपेक डिसीजन ले रही थी, तो दे सोल्ड ऑफ. हमारे यहाँ पे ना ही कोई गवर्नमेंट के ओपेक डिसीजन है, ना ही बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है. Just based upon valuation, they decided to take exit, and also earning growth was relatively much lesser for them in their exposure, compared to, let's say, other markets like Brazil or South Korea or Taiwan or Japan or Hong Kong. So basically, उनका एक्सपोजर किधर है? आप ये सोचो ना, इंडेक्स की बात करो तो 35% आपका BFSI बैंकिंग का एक्सपोजर है.
जहाँ पे कहीं कहीं जगह पे अर्निंग ग्रोथ मॉडरेट है। दूसरा एक्सपोजर 11-12% आईटी का है इंडेक्स का। बाकी आपका कहीं ना कहीं एनबीएफसी या तो फिर अपना एफएमसीजीज या कंज्यूमर में है। तो आप देखो तो कहीं कितने सारे ऐसे पॉकेट्स है जो जहाँ पे एफआई का बहुत बड़ा एक्सपोजर, वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ मॉडरेट है, और उनको उसके सामने कहीं और ज्यादा बेटर ग्रोथ वाले मार्केट सस्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ना ही गवर्नमेंट साइड से कोई उनको पंगा है कि पॉलिसीज खराब है, ना ही बैलेंस शीट साइड से पंगा है। उनका सिर्फ है सिर्फ ट्रेड ऑफ है बिटवीन वैल्यूएशन एंड द अर्निंग ग्रोथ। अभी जैसे मैंने आगे बताया, जिस टाइम पे उनको लगेगा कि अपना मार्केट रीजनेबली वैल्यूड है और थोड़ा सा भी अर्निंग रिकवरी दिख रहा है, दे विल कम बैक विद लॉट स्टॉक एंड बैरल, और बाय दैट टाइम अदर मार्केट्स वुड बिकम स्लाइटली एक्सपेंसिव फॉर देम। सो वेट फॉर दैट टाइम। वो टाइम अभी आएगा या 6-8 महीने बाद आएगा, ओनली गॉड नोस। बट माई ओनली पॉइंट इज दैट दे हैव एट द almost reach at their highest point of the selling, and probably intensity may not be as severe as what we have seen, let's say in the month of March or in the recent quarter. That's what the answer is. Do you see the growth of India in the range of 7 to 8% after the war ceasing, or will that be too high and unrealistic? I think 8% is unrealistic, 7% is still doable if the war settles down very quickly. Which sectors would be very aggressive after the war is over? सो आई थिंक एक तो गोल्ड में क्लैरिटी है कि वो अच्छा ही रहेगा। आपने गोल्ड सिल्वर रिन्यूएबल एनर्जी लिखा है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी तो वैसे भी स्ट्रक्चरल थीम है, बिकॉज आपको डाइवर्सिफिकेशन फॉसिल फ्यूल से करना ही है। ओनली थिंग इज दैट वहां पे डिमांड सप्लाई का मिसमैच है कि आपकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है, उतनी डिमांड नहीं आती है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाकी जो जैसे मैंने बताया कि अगर एग्रेसिव वॉर स्टॉप होता है तो बीएफएसआई वुड बी द हाईएस्ट लिवरेज सेक्टर टू गेन द बेनिफिट। And metal as a sector looks very structural in terms of high energy cost and also relatively stickier higher prices of copper or aluminum and zinc and all. So I think वो एक sector consistently अच्छा लग रहा है। Nothing to do with war, but pharma looks pretty decent in terms of valuation and the earnings growth what it is offering. Uh, so these are the couple of sectors where war-related uncertainties will have a pivotal role, especially BFSI in the equity side. What about the old school IT companies versus new age IT companies with high growth, which is good for long term? देखिए सर, ऐसा है कि ओल्ड स्कूल और न्यू एज आईटी ऐसा तो कुछ नहीं है। ओल्ड स्कूल कंपनी भी न्यू एज आईटी करती है, लेकिन उनकी साइज बहुत बड़ी है तो वो दिखता नहीं है। और कई जगह पे साइज बहुत छोटी है, उनकी टोटल रेवेन्यू में वो नया आईटी का काम है वो ज्यादा है, तो दिखता है। बट दोनों केस में मतलब न्यू एज आईटी कंपनीज में भी वैल्यूएशन का मिसमैच वर्सेस अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो बीन पनिश्ड वेरी एग्रेसिवली in the last 6-8 months. So we'll only have to see in the coming quarterly numbers and the management commentary and their outlook about how the order book looks like. Which is the ideal percentage of large, mid and small cap in the portfolio in current situation and going forward? So basically सर, हमारा ऑल वेदर एंड डाइवर्सिफाइड में हम मिनिमम 40% लार्ज कैप रखते हैं। बाकी जो आइस एंड बिजनेस साइकिल है उसमें वो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो एंड इट इज प्योरली स्टॉक पिकिंग एंड देन द मार्केट कैप डिस्कवरी। सो हम अच्छा स्टॉक लगता है तो लेते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप से हो या मिड है और लार्ज कैप हो। केमिकल सेक्टर पे व्यू, सो आई थिंक केमिकल सेक्टर विल आल्सो सी लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ वॉर। एंड उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होगा। किसी का रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट का शॉर्टफॉल है, किसी का रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत स्पाइक हो जाएगा तो उसके मार्जिन हिट हो जाएंगे। तो 1-2 क्वार्टर तो नंबर बहुत डिस्टॉर्टेड आएंगे। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि सेक्टर थोड़ा सा बॉटम आउट दिख रहा है, एंड सिलेक्टिव बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज 100% दिख रही है।
What about gold and BN? Because I missed the commentary of yours. BN means बैंक निफ्टी, आई डोंट नो. सो आई थिंक मैंने अभी आंसर दिया है. आई थिंक आपको उसका रिव्यू मिल गया होगा ऑन गोल्ड एज वेल. सो 4,000 4,200 इज अ वेरी गुड लेवल इफ इट कम्स. अभी 4,700 के आजू बाजू है. एंड सो बेसिकली गोल्ड इज डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स. कैन मेटल सेक्टर गिव कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? लगता तो है सर. व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज? सो हम इंडिविजुअल कंपनी पे बात नहीं करेंगे, लेकिन कैपिटल गुड्स में पावर एंसिलरीज एंड पावर साइड में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है. एंड वहाँ पे मतलब लॉन्जिटिविटी ऑफ ग्रोथ इज प्रेटी स्ट्रांग. सो एक अच्छा कंफर्ट है. ऑब्वियसली वैल्यूएशन यू विल हैव टू कीप क्वेश्चनिंग एंड वहाँ पे वो ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा. बट आई थिंक विद इन द कैपिटल गुड्स, पावर एंसिलरीज एंड डिफेंस इज अ पॉकेट वेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है. Why FMCG is consistent underperforming? Because of the very poor earning growth and still high valuations. I think यहाँ पे वो जो अंडर परफॉर्मेंस जो चालू हुआ है वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा. और दूसरा क्या हो रहा है कि ब्रांड लॉयल्टी नहीं रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, जो जेनजीज एंड और यंगस्टर्स है. सो दे डोंट केयर अबाउट sticking to the particular brand. They are open for innovation, they are open for new offerings and new taste and new preference. And that's why business model itself is now, for the traditional players, it is under question mark. And secondly, the logistics supply chain, which was earlier general trade and negative working capital वाला धंधा था, वो अभी रिवर्स हो रहा है. एंड आपका मॉडर्न ट्रेड एंड क्विक कॉमर्स इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ. एंड वहाँ पे आपकी बैलेंस शीट थोड़ी सी मतलब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल में जा रही है, जो उनके वैल्यूएशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. सो आई थिंक ये सेक्टर को आउट परफॉर्म करने में बहुत वक्त है. आईटी सेक्टर मैंने अभी व्यू दिया थोड़े टाइम पहले. रिन्यूएबल्स पे हमारा बात हुआ, एफआईआईस पे हमारा बात हुआ. फर्टिलाइजर्स, आई थिंक ये सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा बन रहा है. एंड थोड़ा सा टाइम बिंग डिसरप्शन दिखेगा 1-2 क्वार्टर में. बट दे हैव करेक्टेड अ लॉट एंड गुड अपॉर्चुनिटी इज शेपिंग अप. सर एक इंडिविजुअल प्राइवेट बैंक के ऊपर, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन है, जो मैं इनडायरेक्ट आंसर दूंगा बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस. आई थिंक it's not going to outperform the market in a significant way. At the best, it can give return at par to the market. At the same time, there are other opportunities within the sector which can do much better. Yeah, so that's the answer. I hope you would understand. Is India growth story intact as we are more dependent on oil and Middle East dependency? सर ये तो पहले से है, आज का बात नहीं है. But we have been rather diversifying away from the oil dependency or Middle East dependency. बट एकदम से अगर कोई स्पाइक आता है तो हमको उसका प्राइस तो पे करना पड़ेगा, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज टू मच डिपेंडेंट अपॉन दैट. So growth story is intact, but subject to how the Hormuz plays or how the war plays. So अगर हमने सिनेरियो एनालिसिस देखा कि अगर वॉर थोड़ा लंबा चल जाता है, तो वी माइट सी 100 basis point growth reduction, which is more or less known by the market and market is aware about it. Probably 21,500 800 22,000 के लेवल पे डिस्काउंट हो जाता है वो चीज़, जो हम 22,500 तक तो जाके आए. अगर वॉर बहुत जल्दी रिवर्स होता है तो फिर उसका रिकवरी भी उतना ही फास्ट आएगा. बट यस, वी आर डिपेंडेंट अपॉन दैट मिडल ईस्ट एंड नॉट जस्ट वी, बट काफी दुनिया डिपेंडेंट अपॉन है. चाहे चाइना हो या साउथ कोरिया और जापान हो, कोई भी हो. ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो ट्रेडिशनल अर्निंग ग्रोथ है.
ट्रेडिशनल सेक्टर्स है, बट जो एफआईआई को चाहिए वैसे फैंसी सेक्टर्स और फैंसी अर्निंग ग्रोथ अभी नहीं है, जो ताइवान में हो, साउथ कोरिया में हो, या जापान में हो, या तो फिर एनर्जी रिलेटेड जो बूस्टअप है वैसा ब्राजील में एडवांटेज हुआ मेटल्स का, या रशिया में हुआ, वैसा नहीं है. सो you'll have to deal with it for time being with that, but nevertheless our markets are fairly diversified. मतलब we have IT, pharma, metal, banking, auto, real estate, consumer, capital goods, whatnot. So basically we are one of the preferred market for very long term, but in a short term, yes, that's a pain we have to deal with it. बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एफडी रेट विल बी बेटर. यस, देयर माइट बी. हमने आगे भी बोला था कि अभी यहाँ से इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गए हैं, और आरबीआई आफ्टर सम पॉज इवेंचुअली विल हैव टू राइज द रेट, बट देन the FD rate hike will not be still able to beat the inflation, that is for sure. So no point of thinking that you would have a much higher FD rate and as a result of that आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव होगा, वो नहीं लगता है. कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज विद एग्रेसिव टू सेफ स्ट्रेटेजी? सर, सबसे सेफ आपका ऑल वेदर है, गिवन इट्स नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, फॉलोड बाय डाइवर्सिफाइड. उसके बाद बिजनेस साइकिल फंड एंड आइस आर द मोस्ट एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज, बिकॉज वहाँ पे आपका एक्सपोजर टू स्मॉल एंड मिड इज रिलेटिवली मच हायर. बाकी हमारा ऐसा एंडेवर रहता है कि भले कितना भी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी हो, इन्फ्लेशन फीस एडजस्टेड जो उसका रिटर्न है वो बेंचमार्क को बीट करना चाहिए कंसिस्टेंटली, जो हम कर रहे हैं. The weakness of INR is bad for FII inflow, but at the same time, it makes export more competitive. What do you see INR stabilizing to? मेरे हिसाब से देखो, अभी जो 95 96 का लेवल आया था ना, आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हो गया है. अनलेस एंड अनटिल की क्रूड बहुत ज़्यादा लंबा ऊपर रहता है, तो फिर बात अलग है कि हम 9900 तक वर्स्ट केस में जाए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी मैं 20-30% ही असाइन करूंगा. और 70% ऐसा चांसेस है कि वी हैव ऑलरेडी हिट द वर्स्ट ऑफ द INR. इज द ब्रिक्स करेंसी रीजन फॉर FII एग्जिट? नहीं सर, ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. In order to generate alpha, is it possible to have a hedge fund like strategy such as derivative use and long short equity which are offered by SIF in current funds? So देखिए सर, SIF के प्रोडक्ट का मुझे मालूम नहीं, लेकिन we don't believe in derivatives, and nor we have a long short strategy as such. We simply believe in right stock picking, sector rotation, cash generation, and we have been generating alpha because of that. बड़ा सिंपल प्लान वेनिला प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं. इतना कॉम्प्लिकेशन करके रिटर्न, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, डिस्पाइट ऑफ डूइंग दिस एजिंग एंड ऑल, पीपल आर स्टिल नॉट जनरेटिंग सिग्निफिकेंट अल्फा. सो हम थोड़ा सा वो डेरिवेटिव से दूर ही रहते हैं, एंड दैट्स गुड फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टर्स, आई थिंक. What about the EMS sector, like so I think EMS सेक्टर में वैल्यूएशन बहुत हैवी था. वहाँ पे काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है. लॉन्जिटिविटी बहुत अच्छा दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट्स का. सेम इज फॉर द सोलर, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बाय एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन एंड यू हैव टू hold it on for a long period. They are not a bad businesses. Only thing is that they have been a culprit of the excessive valuations, which has now come to a very reasonable level. Is there any expert reviews of our MF portfolio? Yes, sir. Please get in touch with our MF team. They would be more than happy to help you. Okay, BN means Bitcoin. सर, नहीं समझता है मुझे बिटकॉइन के ऊपर ओपिनियन देना, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एसेट क्लास एंड आई डोंट हैव एनी
understanding about the dynamics of that market. When you sell the stock from your portfolio, what is the basis of selling? Sir, there are three bases of selling. One is that we genuinely book profit. Second is we look out for the opportunity cost. So switch over trade. कि एक स्टॉक बेच के दूसरे में जाते जहां पे बेचे हुए स्टॉक से ज्यादा रिटर्न बनाने का गुंजाइश है. और तीसरा है दैट वी सिंपली बुक लॉस बिकॉज वी एक्सेप्ट मिस्टेक वी हैव गॉन रॉन्ग. और एल्स समटाइम आप गलत नहीं जाते हो बट एक्सटर्नल फोर्सेस और सिचुएशन ऐसा डेवलप होता है कि जो अनफोर्सिन था और किसी ने नहीं सोचा था बट हो गया तो आपको डील तो करना पड़ेगा तो यू टेक एग्जिट. सो दीज आर द वेरी थ्री सिंपल एग्जिट स्ट्रेटेजीज वी फॉलो. एक क्वेश्चन है, मेरा पोर्टफोलियो मोस्टली मिड एंड स्मॉल कैप का है. इज इट ओके फॉर अपकमिंग 5-6 years? ऑफ कोर्स इट इज ओके एज लॉन्ग एज योर रिस्क एपिटेट इज देयर. कोई इश्यू नहीं है. ओनली थिंग इज दैट कि हमने ऐसे पोर्टफोलियोज जो देखे हैं क्लाइंट्स के जो खुद मैनेज करते हैं, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो पिछली तेजी के जो घोड़े हैं, पिछली तेजी के जो अच्छे स्टॉक है वो पड़े रहते हैं. एंड नई तेजी में नए विनर्स आते हैं जो उनके पास होते नहीं है. तो ऊपर से और वेल्थ इरोजन और जो गिरावट होती है उसका रेशियो बहुत ज्यादा होता है, तो रिकवरी टाइम बहुत लंबा होता है. तो आई डोंट नो व्हाट क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग ऑन, बट यूजुअली 5-6 साल का होराइजन में डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू व्हाट यू आर होल्डिंग इज गुड और नॉट. Is thorium reactor can change India growth story? Yes, sir. It has a huge potential to change our energy dynamics. And that's what I pray for, that we should reduce our dependency on petroleum products eventually and get benefit out of it. So, yeah, I think we have exhausted almost all the questions. I've tried my best to answer most of them. Yashvi. Uh, yes, sir, you have almost answered all the questions. So, Yes, we have one more last coming up. so do we still have a question last? Yeah. Let me see. What is your view on metal sector as the inflation is expected to rise and interest rates are also expected to increase due to current uncertainties? So जैसे कि मैंने बताया, we are okay with the metal sector as of now. Things are looking pretty strong. मुझे लगता है कि globally high energy and high metal prices are likely to remain there for long time, especially metal prices because of global structural shift which is taking place. Like US is moving towards more industrialization, going away from the financial economy to the real economy, and China is moving towards financial economy from the real economy. So their focus is on return ratios and profitability, which is positive for the end product prices. So I think this global shift is structurally positive for the metal sector. So I think now we are done. Yashvi, you can Yes, sir. conclude the Yeah. session. Thank you so much, everyone, for taking our time and joining the today's quarterly webinar with Credence Wealth. For any other more queries or clarifications, we are more than happy to help you all. Thank you so much. Thank you, everyone. Thanks. Thank you.